Good morning, everybody. This is Debroti Chatterjee, this side from Landmark Immigration. And today we are having Mr. Sahil from Pacific State University and East Tennessee State University. Welcome, sir. How are you? I'm good. I'm good. What about you? Nice, sir. So, sir, today we will talk about these two university, जो कि USA में है, and we will also Sure. discuss about the programs, the eligibility criteria, the fee structure, what about the university, every single thing. And in the meantime, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9041390412 पे. Apart from that, you can comment on the comment section as well. ओके सो सर पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द सिनेरियो इन यूएस राइट नाउ एंड अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट दिस टू यूनिवर्सिटीज as well as we want you to talk about the programs as well. Let me tell you one thing that this is a very right time to go for a USA and very best time I can say to go for a USA for mainly for the Punjab and Haryana students because as you Okay. all know that from last 2 months Australia banned some five states of India and Haryana and Punjab is the major. And after the September, UK is also not allowed the spouse visa, dependent visa. But there is no case in the USA. USA is accepting application from all the boards. Even there is a Haryana board, Punjab board, CBSC, all the students. And if I'm talking about the funding part also, there is a no requirement for a uh, high funding and what is the source of funding. There is no requirement for a USA. And right now, time the US embassy said that they want 1 billion students from the Asia market. 1 billion means 10 lakh students they want to hire, and right now the scenario is around 4 lakh. So still they want 6 lakh students for the USA, and major crowd is from about all we all know that major crowd is from the North India market. Okay. So this is the best time to go for USA, and there's a appointments be easy over here, not a big deal to book an appointments. In fact, if you go and check the Twitter account of US Embassy, Right. yesterday tweet that US appointment is open, and refusal appointments is also open within 2 or 3 days, within few days. So I think embassy का भी बहुत अच्छा support है for a USA, and जो इंटरव्यूज भी हो रहे हैं मेजर क्वेश्चन जो नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट्स का आता है वो है इंटरव्यू सर इंटरव्यू कैसे निकलेगा और क्या चांसेस है इंटरव्यू निकल जाएगा नहीं निकलेगा. तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो इंटरव्यू जो निकल रहे हैं बहुत ईजिली निकल रहे हैं एंड 30 to 2 मिनट्स का टाइम हो रहा है विद इन 30 seconds एंड टू Right. मिनट्स जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं. But approval rate is right time 90-95% you can say that approval rate है if you go for a good university or good institutions. तो भी approval rate भी बहुत अच्छा चला हुआ है. तो I just say that this is the best time to for a USA. मतलब till this year or 1 year, तो USA is in boom and all the students who want to go for a USA because USA is a dream country for all the world. So US almost a dream country. So Okay. and if I'm talking about the job opportunities, so we all know that there's a little bit recession in UK and Canada, but USA market is open and वहाँ पे अभी recession वगैरह कुछ नहीं है because अभी उन्होंने students उठाए नहीं है बहुत कम उठाए हैं from last few years. Even I'm talking about after COVID, US ने बहुत कम students उठाए हैं. That's a reason कि उनके पास अभी job opportunities बहुत है and jobs भी बहुत है. So if For I'm, sure. we talking about the if you're talking about the the appointment date, the visa success rate, so this is the best time. And if हम talking about the कि jobs opportunity किस country में ज़्यादा है, तो अभी तो यूएसए में बहुत अच्छी मार्केट है for job also. ग्रेट और सर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताइए पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट इट एंड आल्सो ईस्ट Yes. टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी. Yeah, so from talking about these two university, I represent Pacific State University and East Tennessee State University. Both are the state university, and Pacific State University is in California, mean LA.
Los Angeles. We all Okay. know that California is a major, major place of the USA. And if we are talking about the East Hmm. Tennessee, and East Tennessee State University is in Tennessee. Tennessee is a place between Washington and California. So both are the state university, both are the public university and the good university because the response rate is wonderful. If I'm talking about the success rate is wonderful. Around Pacific 89 to 90% is success rate for a Pacific State University and same as for a East Tennessee State University also. Because if you apply for the university, then this is a plus point for for your interview because embassy know that the students apply for a university, so the student is genuine and a good student. And if you go for a state Right. university, then this is also the additional point add in your profile. So, matlab, 2 points add in your profile when you go for an interview or when your file is in an embassy. So, state university and the public university. So, two major points add in your, add in your document. So, these are plus point So that visa success rate, state visa university, yes, so state university or public university both are same now. yeah, yes. Both same. Yes, sir. Continue. So, and if I'm talking about the programs we have in Pacific State University, then we have a program for masters MBA for commerce students Okay. and for art students also. If the students study economics or business in plus two or in his bachelor, then we have also for MBA. And if I'm talking about the non-medical students, we have a MSc, MS in Computer Science and IT. In Pacific Okay. State MSc University, we also have, we have. yeah. And if we are talking about the fee structure, fees is very minimum. It's around 15 to 16 like you can say, in which living cost also include 15 to 16 lakh per year. You live in California, Okay. including the living cost. Okay, that's great. So the fees is Really. very minimum. But the Okay. requirement is only one that university want genuine student and a good student. Okay. That's why. That's why the fees is low. And if I'm talking about the eligibility criteria, the eligibility is also very low. 6 bands or 5.5 band in IELTS, 52 band in PT, 19 Duolingo, 61 in TOEFL, and 60% in academics in bachelor's and all. 61 in So the TOEFL yeah 61 in TOEFL, and 15 PT. uh, 52 in PT. 52 in PT and Duolingo they accepted Yeah, 90 book. Duolingo is 90 90, score. Yeah. 94. I think requirements are also not that much high, right? Yeah, requirement is very minimum. I already seen that requirement for US university is minimum because they want that Mhm. if the student clear the interview, then the student is a genuine. So for a US institutions, all the institutions, I'm not talking about specific my institutions, but all the institutions, the requirement is very minimum. Right. And what about the fee structure, sir? Apart from the living cost, like we know that it is 15 to 16 lakhs per year, Yeah. both living and fees. But what is the exact fees cost? It's around $9 to $10,000 per year. Okay. $9 to $10,000 per year between depends on the program you choose. So depends. Okay. That is also fine. It's Yeah, really, minimum. affordable, comfortable price. Everybody can go for it, right? Yeah, and specific in California. Yes, California, right? Beautiful place. Yeah, Los Angeles is the place in which the university is. So this is a I don't know. This is a good university if you go for a affordable price because Right, no other university offer MBA means masters at this price in California. right. That's Absolutely right, sir. And sir, what about the academics criteria in bachelor's? in bachelor's, I have programs in East Tennessee State University.
No, I'm And talking in this about Pacific. No, I'm talking about Pacific Pacific, State University. yeah, हाँ, yeah, yes, Pacific, sir. we have a BBA program for commerce students. Only one Hmm. program I have it for a bachelor's, and that is BBA. And the requirement is almost same, 60% in plus two we want, and 16 Okay. English in class 12. Okay. And if I'm talking about the IELTS, you can give the application at 5 also. PT Okay. 45 marks, TOEFL 56, Duolingo 80. Okay. So you go for a bachelor program, and the fee structure is almost the same. Okay. Okay. एंड सर आई एम टॉकिंग अबाउट कि मास्टर्स डिग्री जो है पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो उसमें तो बैचलर स्टूडेंट जाएंगे ना जो अपने ग्रेजुएशन खत्म करके, बिकॉज मास्टर्स प्रोग्राम, सो Yeah. बैचलर में कितने चाहिए परसेंट, वो मैं पूछ रही Then थी. 60%. It's 60%, 60% in English only. It is like maths चाहिए होगा कि नहीं, any If the students go for a bachelor specific. program, means if the students go for a BBA program, UG programs, then the Okay. requirement for class 12 is 60%, and Okay. English in class 12 is 60. If the student 60%. want to go for master's program for MBA and MSc, then the Hmm. 60% marks in his bachelor's. Even there is BCom, BBA, something like that. In bachelor, Right. we want 60%. 50%. 60. 60%. 60%. ओके, डन. और सर इसमें मास्टर्स के मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं तो उनके ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगे, बहुत सारे. Pardon, I didn't understand what you are saying. नो, लाइक आपने बताया कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक बीबीए, Yes. एमबीए Yeah. ऑप्शंस. तो एमबीए जो है वो स्पेशलाइज्ड है कि जनरल एमबीए है? Specialist भी है. You can go for accounting. You can go for a finance, MBA in finance. You can go for a MBA in international business. So these are specific. And if you go for a general, राइट. there is a MBA in accounting. ओह, दैट्स. और सर अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या अदर फैसिलिटीज है, कैसी है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Yeah, actually, if I'm talking about the university, there's I already told that the fee structure is very minimum. Second, that is university is in LA, in California. Thirdly, if I'm talking about the राइट. university provide, there's a in USA there's two things. One is OPT, optional practical training, and one is CPT, circle राइट. practical training. CPT you can say in राइट. India just like internship in MBA, for example, a CPT is equal to internship in India, and राइट. OPT is just like placement. So university help each and every राइट. student, to go and apply for OPTs and CPTs, and वो job help करने में भी बहुत help करती है. राइट. And if I'm talking about the last placements of our university, then major companies is like Amazon, Apple, and just like that. Because California is a city in which all the company headquarters is there. सारी कंपनी के हेडक्वार्टर यू गूगल ऑन इवन Amazon एप्पल यू कैन गूगल. सो मेनली जो हेडक्वार्टर्स है वो इन कैलिफोर्निया. सो दैट्स व्हाई दैट्स वहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है, एंड कंपनी सारी आती है बिकॉज कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया में, एंड मोस्टली मतलब प्लेसमेंट इजली है. And if I'm talking about the next point, then in first year you can also do a job in university also. So in-house job ओके. also available in the university. इन बिटवीन योर स्टडी. Yeah, एक्चुअली में कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बाहर जाके काम नहीं करना पहले साल. थोड़ा वो लगता है, डर लगता है राइट. कि यार कि तुमसे कैसे होएगा, नहीं होगा. तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप 1 ईयर तक काम कर सकते हैं. वो जॉब्स भी ओके. अवेलेबल है, इन हाउस यूनिवर्सिटी जॉब्स भी available एंड सर काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, आई थिंक बहुत अच्छे ऑप्शंस है फॉर एवरीबडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, व्हाट अबाउट द अकोमोडेशन? अकोमोडेशन उनको इन कैंपस मिलती है कि ऑफ कैंपस ही मिलती है? है. नहीं, ऑफ कैंपस ही है, इन कैंपस अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल. ऑफ कैंपस ही है. एनी Yeah, काइंड but ऑफ nearby हेल्प बहुत. फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कैन हेल्प? Yeah, yeah.
यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। Okay. Next, sir, we will talk about the East Tennessee specifically. तो East Tennessee के बारे में आप थोड़ा बताइए. Yeah, if I'm talking about the Eastern Institute State University, then in this university, all the best programs are available, even for the art students, commerce students, non-medical, even for the medical students. Nursing is also available in this university. Okay. तो जितने भी बेस्ट Okay. प्रोग्राम अवेलेबल है, thirdly, if I'm talking about the Tennessee is the already a state university. Fee structure is around $28,800, but the university provide up to Okay. 9,000 scholarship. आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन Okay. मिलेगा अप टू $9,000. Up to 9,000, 9,000, 9,000. $9,000. You get the scholarship up to, depends upon your profile. Okay. And if more about that, California is a we all know that California is a hot place. It is But also if in I'm talking about California. Tennessee, pardon? No, It this is university also is in in Tennessee. California. No. This Tennessee. university is in Tennessee. Tennessee is Okay. a place between Washington and California. If you search on the USA map, Washington. then yeah, between Washington and California, Tennessee is a place. If I'm talking about Oh. between Delhi and Chandigarh, Haryana is a place. Okay. Just an example. Between Delhi and Chandigarh, Haryana is a place. Punjab means. So between California and Washington, Tennessee is a place. Okay. And So it's like the अगर कोई कैलिफोर्निया भी रहता है या टेनेसी भी रहता है वॉशिंगटन सो दे कैन ट्रैवल लाइक कोई ऐसी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है नो अगर वो ट्रैवल वहां में पे प्रॉब्लम नहीं लोकेट. है, बट ट्रैवल में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली में थोड़ा वहाँ पे ट्रैवल करने में उनको टाइम लगता है। द स्टूडेंट कम फ्रॉम द कैलिफोर्निया और टेनेसी, बिकॉज यहाँ तो इजली है, वहाँ पे डिस्टेंस बहुत बड़ा है। यूएसए इज अ बिग कंट्री एज ओके. कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता राइट. है। रोड्स आर एम्प्टी, रोड्स की प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स एम्प्टी है, खाली रोड्स है, बट स्टिल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। Okay, no issues. I think Washington also very famous, right? Yeah, good thing. And the place Tennessee is developing, तो वहाँ पे jobs की रिक्वायरमेंट आई कैन से कि बहुत ज़्यादा अभी है। अगर मैं बात करूँ तो कैलिफोर्निया से भी ज़्यादा अभी टेनेसी में अच्छी जॉब्स रिक्वायरमेंट है। Okay. And if talking about the placement is the same, just like the Pacific. So OPT, CPTs in operational CPTs university help all the Okay. students. ठीक है. और सर ओपीटी में जो मैंने देखा है या सुना है इट्स लाइक कि उनको बहुत सारे कनेक्शन बिल्डअप करने का मौका मिलता है सो दैट अगर बाद में उनकी ओपीटी खत्म हो जाती है दे कैन गेट ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स राइट बाय द Yeah. ऑर्गेनाइजेशन. Actually, if I'm talking राइट. about OPTs, if I'm a little bit explain about the OPTs. OPT is the best way I can say to get the green card in the USA, राइट. because in the state university the bachelor is of 4 years and master is of 3 years. I'm just taking the example. If you go for a if you go and apply for a bachelor's, after the bachelor's you get the OPT, means you get the placement, and राइट. after that you apply for the green card. राइट. राइट. Actually, the scene is that when the embassy give you green card, then they check all the source, क्या क्या किया आपने, कैसे आए, क्या क्या किया, उसके बाद सब कुछ वो चेक करती है। So राइट. that's why I can say that it's the best way to get the green card in the USA. राइट. So I suggest the students, देखो students के अपने कॉल है, but I suggest the students to apply for the OPTs and get the OPTs, so they easily get the green card in the USA. And if I'm talking about the CPT, that is a circuit practice training, that's also about around 6 months or 1 year CPT is available in the universities. So between the studies, Right. you earn and get the work experience in the USA.
If you have the work For experience in sure. the USA, then you easily get the job in other fields also. So CP is the best way to get the work experience. Right. So that's why. And sir, what about the programs like in arts, commerce? Yeah, if I'm talking about the Right. programs, all the programs, if I'm talking Right. about BA in economics, BA in accounting, BBAs, and Hello. BScs for science students Yes. also. Sir, I'm what now? What you're saying? Okay. I'm saying that mention the program's name like in arts, commerce, medicals, and do we have STEM program also? Yeah, we have STEM program also in Pacific. Also, we have a STEM program. In fact, in Pacific, from September onwards, we have a MBA in STEM also. The students can do MBA Okay, in STEM. MBA. In, yeah, MBA in STEM. So that's a best way. So MBA in STEM also available. And if I'm talking about the programming East Tennessee, then you know you get program. If I'm talking about the art students, you get the BA easily. If I'm talking about the commerce students, BBA and BBA is major for the commerce students. So if I'm talking about the For all non-medical the BSc, specialization. yeah, if I'm talking about non-medical, BSc computer science and non-medical is also BSc in specific, specific physics, chemistry also available. If the students go for that also. If I'm talking about the medical student, then nursing is also available. Nursing is a major and demanded course in USA. एंड नर्सिंग इज मतलब आपको हर यूनिवर्सिटी में नर्सिंग नहीं मिलेगी बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे नर्सिंग मिलती है Right. नर्सिंग इज द मेजर बिकॉज एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट जॉब्स इन नर्सिंग तो जॉब भी बहुत अच्छी है नर्सिंग है ठीक है आई विल आल्सो शेयर द और लिस्ट नर्सिंग ऑफ में भी आपको अच्छी सीपीटीज भी मिलती है तो सर नर्सिंग में जो द सीपीटीज है तो वो फील्ड उनके हॉस्पिटल्स हो गए है ना हेल्थ केयर सेंटर्स तो उनमें उनको सीपीटी के ही ऑप्शंस मिल जाएंगे yeah little bit about the nursing and all for example early child care का भी कोर्स भी अवेलेबल है वैसे ही वहाँ पे जॉब्स हम्म मिलती है और होटल ठीक मैनेजमेंट है के भी कोर्स अवेलेबल है if the students want to make a career in a hotel management or hospitality sector then hotel management course is also available. ओके I will also share the list of आंसर the अपार्ट programs. I will also share the यस list of the programs that you that fluctuate in your students. ओके And sir, apart from that, I want to know about the eligibility criteria. Yeah, that's और a एक main चीज question. सर Like, eligibility क्राइटेरिया से पहले और एक चीज सर इसमें कोई स्पेसिफिक मैथ्स रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है एज सच nothing, सारे nothing, प्रोग्राम्स में nothing like that. मैथ्स Nothing like या that. साइंस में कोई सब्जेक्ट्स Nothing like that. Actually, it depends on the program the ओके student choose. If the student choose, if the student go for a BSc, then I think the maths is the major requirement. But the students who go for a BA course and the BBA course, then the requirement is maths requirement is not there. ओके And एंड सर if I'm वन मोर talking about क्वेश्चन यस if I'm यस talking सर about टेल the मी criteria, eligibility criteria, then the same is criteria is just like the PSU. We accept the application of the 60% in class 12 and same 16 in English. IELTS I'm talking about the little bit high from राइट the PSU. We accept application at 5.5 in IELTS, 44 in PT, 56 in TOEFL, and सर same. व्हाट इज What are you saying? Yeah, हेलो I will repeat. I will repeat. 60% in यस academic, 5.5 in IELTS, ओके 44 in ओके PT, TOEFL is 56, and ओके Duolingo is 90. Duolingo is 99. okay, okay, sir. And sir, apart from bachelor's and post graduation programs, East Tennessee do have the mini certification courses or something like that. No, actually Um, USA तो 4 साल का होता है.
सॉरी यूएस ये अवेलेबल नहीं है ना छोटे डिग्रीज? नो नो, यूएसए एक्चुअली में ये है बैचलर कि 4 इयर्स की स्टार्टिंग है। एक्चुअली में बैचलर्स प्रोग्राम जो यूएसए में वो 4 इयर्स के होते हैं if you go for a हाँ university. If you go for a college, then you get the course for the 2 years also. But if you go for a university, then राइट, the specific criteria of the US says 4 years bachelor's program and 3 years master program. 4 इयर्स, राइट, ओके। आंसर But व्हाट if I'm talking about the students, I suggest the कैन यू students कम? just pardon what are you saying? यस सर। I suggest the student ki, Sir, I'm apart asking that can you just repeat the fee structure as well? Yes. what do you want to repeat? What are you saying? The fee Can you structure, sir. The Yeah, fee fee structure. structure. Yeah. Fees is around $28,800. $28,800 Okay. and up to 9,000 scholarship is available. Okay. $9,000. Okay. That depends on academics. That depends on their profiles. Yeah, depends upon their profile. Okay. Okay. And apart from that, if I talk about the university, talk about the other facilities, what is about that? Uh, Facilities, मतलब good one I can say because the OPD CPD is just like PSU. This university is also available, Mhm. and Mhm. but the in this university there is a plus point also. We have a program for a sports student also. स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास बैचलर प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और Mhm. उनके थोड़े बहुत लीडर विक्स मार्क्स कम होते हैं बिकॉज दे मेनली इन द स्पोर्ट्स। देन वी हैव अ प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स आल्सो। और इस यूनिवर्सिटी में मेजर ये है कि इस यूनिवर्सिटी में क्लब्स वगैरह बहुत एडिशनल एड्स है। स्टूडेंट जाता है, ठीक है। कम्युनिटीज है, कम्युनिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिटीज बहुत अच्छी है, तो स्टूडेंट कैन जॉइन द हम्म। कम्युनिटी एंड यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। Yeah. So it's a best way, to make a connection, make a network. क्योंकि आपका नेटवर्क जब तक बड़ा होगा तो आपको जॉब में भी इजी होगा, आपको सेटलमेंट में भी इजी होगी, आपको ग्रीन कार्ड में भी इजी होगी। तो वहाँ पे कम्युनिटीज बहुत अच्छी है, तो यूनिवर्सिटी हेल्प करती है, तो वहाँ पे आप इजिली जाके किसी भी कम्युनिटी में आप जा सकते हो जहाँ पे आपका नेटवर्क बनेगा, आपके फ्रेंड्स बनेंगे। राइट। तो एक प्लस पॉइंट ये यूनिवर्सिटी का है। एंड सर, आई वांट टू नो वन थिंग, लाइक अभी अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को या बच्चों को who are wanting US as their education background, so उस पे आप क्या मतलब इंटरव्यू के लिए क्या सजेस्ट करेंगे whenever they appear for an interview, USA इंटरव्यू, so उनके लिए क्या हाँ देखो, सजेशन करेंगे आप? हाँ देखो, इंटरव्यू मैच में 100% तो मतलब 50-50% गेम होता है, थोड़ा बहुत किस्मत भी साथ देती है इंटरव्यू में। बट आई ट्रेन मैनी स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू। मैंने अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया इंटरव्यूज के लिए भी। तो आई सजेस्ट कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो बी योर ऑन, मतलब जैसे आप हो वैसे हो। किसी और की तरह बिहेव करने की जरूरत राइट। नहीं, किसी और की तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। अगर आप पैंट शर्ट पहन के जाते हो तो पैंट शर्ट पहन के जाओ, अगर आप सूट में कंफर्टेबल हो, कोट में कंफर्टेबल हो तो कोट पहन के जाओ। बट अगर आप कोट में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोट मत पहन के जाओ, सिंपल शर्ट एंड एक पैंट पहन के जाओ सिंपल। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे जाओ। सेकेंडली इफ हम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू में क्या होता है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे सिर्फ हमारा नाम पूछा और हमें रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप सीधा रूम में गए, आपको नाम पूछ के आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा होता है, जनरली होता है। बिकॉज द सीन इज दैट जैसे आप यूएसए की एम्बेसी में एंटर करते हो ना, तो वहाँ के कैमरेज आपको देख रहे होते हैं, आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं, आपको मार्क्स दे रहे होते हैं, स्कोर कर रहे होते हैं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ हम टॉकिंग अबाउट वन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 3 लाइनें हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, आप एक लाइन में खड़े हो, लेकिन आपको लग रहा है कि सेकंड लाइन में रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और सेकंड लाइन बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, आपने अपनी लाइन तोड़ के दूसरी लाइन में आप स्विच हो गए, तो समझ लो इंटरव्यू राइट। रूम में जाने से पहले ही आप रिजेक्ट हो। बिकॉज यूएस इज वेरी स्मार्ट इन ऑल द थिंग्स, इन दिस थिंग्स मेनली आई कैन से, बिकॉज वो स्टूडेंट को जज करना उसको बहुत अच्छे से आता है।
अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी लाइन तोड़ी है तो द यूएसए थिंक्स दैट हमारी कंट्री में आके भी ये हमारे रूल्स तोड़ेगा, हमारे रेगुलेशंस तोड़ेगा, एंड द स्टूडेंट में पेशेंस भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, दैट्स तो व्हाई वी रिजेक्ट द एप्लीकेशन। तो आई सजेस्ट टू राइट, स्टूडेंट कि जैसे आप छोटी एमबेसी छोटी में एंटर चीजों कर का ध्यान रखना चाहिए। या जैसे आप एमबेसी में एंटर करते हो तो मतलब बहुत अपने आप फर्स्ट तो आई सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट थिंग बी योर ऑन, आप जैसे हो वैसे बन के जाओ। ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब जैसे आपको अच्छा लगता है पहनना वो पहन के जाओ। बस सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मल्स पहन लो, शर्ट पहन लो, ऐसे टी शर्ट वगैरह नहीं पहनो, और लंबे लंबे बाल ना हो आपके, ज़्यादा बियर्ड थोड़ी क्लीन हो, मतलब जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो वैसे ही लेके जाओ। थोड़ा बियर्ड भी सही हो, लंबे बाल नहीं हो, शॉर्ट हेयर हो, एंड एक शर्ट हो, नीचे पैंट हो, दैट्स अ बेस्ट थिंग। एंड सेकेंडली, जब आप यूएसए ये एम्बेसी में एंटर करते हो तो बस सही से रहना है, ये नहीं वहाँ पे जाके कुछ हरकत करनी है, लाइन तोड़नी है, डिसिप्लिन हम्म, एम्बेसी का डिसिप्लिन तोड़ना है, कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं करना। मतलब जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे चलने दो। बिकॉज अगर आपने एम्बेसी में एंटर करी है तो ये तो श्योर है कि आपका इंटरव्यू होएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बोल देंगे कि यार इंटरव्यू क्लोज हो गया कल आना, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिली है उस दिन की तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होएगा होएगा, ये डन है। बेशक जल्दी हो जाए या लेट हो जाए वो डिपेंड करता है, बट इंटरव्यू डेफिनेटली होगा। तो जैसे अब ये नहीं है कि यार आप या गुस्सा करो या कब होएगा, रिएक्ट करो, ये वो आराम से बैठो, सौ के बैठो अपना। उसके बाद जाते हो तो विश करो, बट वहां पे भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे ओवर रिएक्ट ना करो। फॉर एग्जांपल आपको यूएस का वीजा लग गया, एक्चुअली मेरा लास्ट केस एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था मेरा, मैं बताता हूँ आपको। उसका सब कुछ सही हो गया था और उसका पासपोर्ट ले लिया था। अगर पासपोर्ट यूएस में आपका ले लेते हैं आपके वीजा ऑफिसर, देन आपको वीजा आ गया। तो उसका पासपोर्ट रख लिया था, तो उसने ना एकदम से रिएक्ट कर दिया, वाह मुझे वीजा मिल गया, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था वो, उसके आगे ही वीजा ऑफिसर के आगे ही। अच्छा, तो वीजा ऑफिसर ने क्या, थैंक यू सो ओके, मच योर पासपोर्ट। तो एट अ टाइम एकदम से उसने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जो एक्साइटमेंट दिखानी है, जो कुछ भी दिखाना है, वो वीजा ऑफिसर के लिमिटेड सामने नहीं, मतलब एक लेवल पे। या राइट, मतलब कैबिन से बाहर आके दिखाओ, कैबिन से बाहर आके दिखाओ। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, आप पासपोर्ट रख लिया, मतलब आपको वीजा मिल गया, तो जितने भी आप खुश हो, एक्साइटेड हो, तो वो कैबिन से बाहर आके रिएक्ट करो, कैबिन में नहीं। तो ये थैंक यू छोटी सो छोटी मच चीजें। सर, सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए आज, बोथ टू वेलकम। यूनिवर्सिटी। और अभी जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर और वो अपनी असेसमेंट भेज सकते हैं, करवा सकते हैं, और नियरेस्ट ब्रांच से भी विजिट कर सकते हैं फॉर दीज टू यूनिवर्सिटीज। बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको रीजनेबल प्राइस में, जो अफोर्डेबल है, और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। इवन यू हैव स्कॉलरशिप्स ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टेनेसी, up to 9,000. So do visit our एक्चुअली में offices. ऑल्सो स्कॉलरशिप है, पीएसयू में ऑल्सो स्कॉलरशिप है Yes. अप टू $2,000, $2,000 पीएसयू में Okay. स्कॉलरशिप। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। होपफुली हम फिर वेलकम। एक बार मिलेंगे। एंड या यस, देन थैंक यू सो डेफिनेटली, मच। डेफिनेटली, या यस। वेलकम।